Hello and welcome to Gantavya IIT. My name is Rohit. In JMIN PYQ solving series, we are currently covering differential equation and our question is from JMIN 2025. As always, our discussion is not only regarding solution but also regarding the approach which a student can adopt during examination. If we decide a proper approach in the beginning by carefully observing the terms of the given question, the solution becomes very easy and we can solve question in minimum amount of time. Obviously, the subject knowledge is the most important thing for this. So let us see the question. In this question, a differential equation is given. Looking at the question, we can clearly observe कि ये एक linear differential equation है because I have a term of y dash which is dy by dx. I have one term of y and the coefficients of these two are the function of x only. So what is a linear differential equation? Let us revisit the concept. A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q is called a linear differential equation where this p and this q are either constant or function of independent variable only, which is x here. To solve such an equation, we require a factor जिसको कि हम integrating factor बोलते हैं. Its value is e raised to the power integration p dx. Once we find this integrating factor, हम इस equation का solution कुछ इस तरह से लिख सकते हैं y into integrating factor equals to q times integrating factor इस पूरे का integration plus a constant of integration. This is arbitrary constant of integration. So let us solve this question. Let me first divide the entire equation by x square plus 1 क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए dy by dx अलग चाहिए. So once I divide by x square plus 1, the equation reduces to this format. Now let me rearrange the term again. So it is dy by dx plus, in place of q, I actually have minus 2x upon x square plus 1 into y is equals to, now right hand side after cancellation of the terms becomes x square plus 1 multiplied by cos x. So if I compare this equation with the general form of linear differential equation, I can find the values of p and q. P and q are respectively here minus 2x upon x square plus 1 and x square plus 1 into cos x, which is on right hand side. Now let us find integrating factor. As per the above formula, integrating factor is e raised to the power integration p dx. So once we integrate this, we can easily integrate this by substitution because x square plus 1 का जो derivative आएगा वो 2x आएगा. So this 2x along with dx will become dt. So this integration is simply minus integral 1 by t dt, जिसका कि आंसर log t आएगा. Mod हमने हटा दिया है because x square plus 1 is positive, so integration becomes e to the power minus log x square plus 1, and we know this log has base e, so because of log anti-log property this minus 1 goes to the power of x square plus 1. So ultimately after cancellation of base e and log it becomes 1 by x square plus 1. तो ये हमारा integrating factor है. Alright, so now let us use this integrating factor to solve this equation. अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला इट्स सॉल्यूशन इज y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स. we'll multiply this by integrating factor which is 1 upon x square plus 1. टर्म्स भी ऐसे आ रहे हैं कि इजीली कैंसिलेशन हो रहा है. इसका इंटीग्रेशन प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. So I can cancel these two terms easily. Now if I multiply this x square plus 1 on the right hand side, it will become x square plus 1 multiplied by the entire term on the right hand side. Look, integration of cos x will become sin x. तो राइट हैंड साइड हो जाएगी sin x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का. ऑलराइट, नाउ हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है y इज इक्वल टू 1. तो जब हम इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे एंड y की जगह पर 1 रखेंगे तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का वैल्यू मिल जाएगा.
When y is 1 and x is 0, I can see the right hand side becomes sine 0. Sine 0 is again 0 plus c. So value of c is 1. So this is value of arbitrary constant. Now I got my particular solution. जब मैं c की वैल्यू रखूंगा तो मेरा particular solution बन गया y equals to x square plus 1 multiplied by sin x plus c. c is 1. So ये आ गया हमारा फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन और यही हमारा फंक्शन है विच इज y इक्वल्स टू yx. सॉल्यूशन आने के बाद अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है बिकॉज दे आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल y फ्रॉम -3 टू +3. अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है. -3 से +3 अगर इंटीग्रेट करने को पूछ रहा है तो हम शायद यहाँ पर इवन आउट फंक्शन की प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं. Alright, so now let us try to integrate this function from -3 to +3. Integration -3 to +3 y dx. इसका वैल्यू हमें निकालना है. And as per our calculation comes integration -3 to +3 x square plus 1 and the second factor was sin x plus 1. जैसे ही हमें इवन आउट फंक्शन की प्रॉपर्टी दिमाग में आती है हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक इवन फंक्शन है. अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट -3 टू +3. मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन dx. As we can see, the first part is nothing but product of two function. x square plus 1 एक इवन फंक्शन है, sin x एक ऑड फंक्शन है. इवन और ऑड का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है. तो जब हम -3 से +3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. Now to integrate the second part I can use the property of even function क्योंकि ये हमारा even function है. So I can write 2 times integration. I can half limit of integration. It becomes x square plus 1 dx. So its integration becomes 2 x cube upon 3 plus x and we put limit of integration from 0 to 3. We put the value, it becomes 2 times. This is 9 plus 3 and lower limit is 0. So it becomes 24. So this is our final answer to this question. If you like this video then please like, share and subscribe the channel. Thank you.